My first question straight up, अभी जो हॉकी वर्ल्ड में बात हो रहा है शिजेश भाई, पेरिस ओलंपिक्स का शेड्यूल इज आउट, सो ऑल द चैंपियन टीम्स, former champions, all are in the same group. How are you looking at that? It's all about that day. That's what I want to tell, because in a even like Olympics, you cannot predict which team is going to do the best thing or the worst team, because the experience from the past Olympics, I learned that you cannot take any team in a light way, because 2016 I think I drew with Canada, break out all the dreams. And again, last Olympics in the semis, Belgium, we lost to them. And in 16, you know that we beat Argentina, and they won the Olympics. So Olympics is a place where you just go there, think about that particular day, give your best, seize the day, come back, prepare for the next one. The prediction and the expectations, just keep it away. So I think the pool is pretty good, but in the new era, the game, the Olympics starts from the quarterfinals, because quarterfinals, semi-finals and the finals are going to be the really crucial moment for us. Srijesh, your initials are PR. Does that mean Podium Revolutionary, Srijesh? I wish. It was a long journey. Eventually, I want to say that I had a camp with Viren Bhai in 2006. That's Asian Games camp, and from there I'm traveling here till now. It's 2024. That was in 2006. In Rourkela we had that camp. So it took long time to make that PR into that podium revolution, whatever it is. Okay. But still, what I tell my youngsters is like dream about and work for that, because in the morning session Viren Bhai said that okay, by reaching there in the Olympics village or playing in Olympics, make half of the athlete satisfied. They are really happy to be there to get that label Olympian. But now the trend has changed a lot. Now people wanted to be there in Olympics to win a medal. So that was a big revolution for Indian hockey, especially for Indian sports, because now we are dreaming about winning a medal there. And I think for me it took a long time to understand that the importance of winning a medal, or winning a medal in the big level. But for the youngsters, it's a quick thing. They are learning it. They are seeing everything in front of their eyes, and so it is quite easy for them to adapt it and apply it. So I think yes, it's changing a lot in over the way the journey happens. मैं कुछ टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में बताना चाहूँगा. टीम स्पोर्ट की जब बात करते हैं तो काफ़ी लोगों के बारे में क्रिकेट है, तो हम याद करते क्रिकेट की 83 में जब कपिल देव ने वो कैच पकड़ा था वीव रिचर्ड्स का, MS धोनी ने जो 6 मारा था, वो मोमेंट्स याद है. लेकिन जब हम हॉकी की बात अब करते हैं तो आपका वो पेनल्टी जो सेव था, मैं वहाँ पे था टोक्यो में. आई वॉज वन ऑफ द वेरी फ्यू. बोरियादा थे, अनिलावा थे. आई वॉज देयर एंड सी कि हमारे भी हार्ट बीट्स इतने थे, एंड क्लॉक स्टॉप इफ यू रिमेंबर. सो दैट वॉज अ वेरी स्पेशल मोमेंट, नॉट ओनली फॉर एवरी वन ऑफ अस. बट ये जो जर्नी आपने बताया है, इफ आई आस्क यू कि to be on the podium as a hockey player, what does it takes? I mean, it's apply for Savita as well. What it takes to be on the podium? Podium is dream, and once you achieve that, you feel like yes, we can do it again and again. And about your comment on that particular save, मुझे हमेशा ये चीज़ दिमाग में आता है, या मैं बिलीव करता हूँ कि कुछ भी होता है अच्छा के लिए होता है. So that 25 seconds when the clock stop हो गया था, जहाँ पे अंपायर का टेक्निकल टेबल का जो भी एरर था, वो मेरे लिए था, क्योंकि उसी वजह से वो पीसी हुआ. The entire India, the entire world stopped for 40 seconds. ठीक है, वो 40 seconds में जो हेलमेट के पीछे छुपा वाला मेरा फेस था, the hidden face was visible to everyone. Right? सबने, I mean, पता नहीं, जिसने हॉकी भी कभी देखा नहीं है उसने भी गूगल किया कि गोलकीपर कौन है भाई. And definitely I can say that after that, at that 6 seconds that save के बाद मेरा Instagram followers भी ऐसे बढ़ गया. ऐसे नॉर्मल फैक्ट, क्योंकि लोगों को तभी पता चल गया कि अरे यार ये गोलकीपर है, ये हमारे इंडिया टीम का गोलकीपर, चलो फॉलो कर लेता है, इसने बचा दिया. So something happens for a good reason. But after that podium finish, the confidence what we gain is like can't believe, because आप जब तक
कुछ चीज़ हासिल नहीं करते हो तब तक आपको लगता नहीं कि यार आप कर सकता है. नाउ वी अचीव्ड इट. दैट्स गिव द यंगस्टर्स कॉन्फिडेंस. दे व्हेन दे लुक इनटू द नेक्स्ट, आई मीन द पेरिस, दे फील लाइक यस वी कैन. सो वो चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छा था. एंड दैट पोडियम इज विजिबल फॉर एवरी वन ऑफ अस नाउ. नाउ सविता जी, ऑफ कोर्स टोक्यो में जिस तरह से इंडियन वुमेन्स टीम को सेलिब्रेट किया गया डिस्पाइट द टीम नॉट बीइंग ऑन द पोडियम, दैट वाज एक्सट्रीमली रेयर टू सी इन इंडियन मीडिया. आपने वो हाई भी देखा है, अभी रांची में जो क्वालिफायर हुए उसके लो भी देखा है. तो आपने ये जो हाई और लो का जो एक मैग्नीट्यूड होता है माइंड में मेंटली, उसको आपने कैसे फेस किया, कैसे इंजॉय किया, कैसे आपने उसको टैकल किया? बिल्कुल डेफिनेटली, जब जो टोक्यो ओलंपिक्स में जो परफॉर्मेंस थी उसके लिए भी हमने काफ़ी हार्डवर्क किया था. और कहीं ना कहीं हमें 1 साल एक्स्ट्रा मिला था कोविड की वजह से, और उसमें सब वेल प्रिपेयर्ड थे कि हमें टोक्यो में कुछ करना है. ये सच है कि जब हम गए थे तो उससे पहले ज़्यादा किसी को उम्मीद नहीं थी कि इंडियन हॉकी कुछ अचीव कर पाएगी. अगर क्वार्टर फाइनल भी पहुंच जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर रियो ओलंपिक्स देखा जाए तो हमने 12th पे फिनिश किया था. और वो लोगों को होप रखना भी, उससे ज़्यादा हमें पता था हमें स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना है. और इसीलिए जैसे जब हमारा क्वार्टर फाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ था, हमें मैसेजेस मिल रहे थे कि हाँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे पूल में टॉप किया था, उन्होंने एक भी मैच लूज नहीं किया था, तो और भी ज़्यादा सभी को वो था कि बहुत ही कम चांस है कि इंडिया जीत सकता है. बट हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था. हमें पता था कि ऑस्ट्रेलिया अच्छी टीम है, सभी को उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा. बट एज ए टीम हमने डिसाइड किया था कि हम अपनी तरफ से 100 नहीं, आज 200% एफर्ट्स डालते हैं. मैच ख़त्म होने के बाद रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हम और कुछ कर सकते थे इस मैच में. और एज ए टीम हम वो मैच खेले और सभी को पता है रिजल्ट अच्छा रहा. बट ये सिर्फ उस मैच की बात नहीं थी. हम हर मैच में कोशिश, हर एक एथलीट कोशिश यही करता है कि हमें जीतना है, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो उसी माइंडसेट के साथ करते हैं कि हमें जीतना है, हमें कुछ अचीव करना है. बट हाँ, डेफिनेटली टोक्यो ओलंपिक्स के बाद सबकी होप बढ़ी, हमारी खुद की अपने आप से भी होप बढ़ी कि हमें और भी फ्यूचर में अच्छा करना है. और अच्छा ही चल रहा था सब कुछ कि हमने नेशन कप है जो कि प्रो लीग, हमने फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किया, टॉप टीम्स के साथ खेलना होता है. एंड उसके बाद 17 साल के बाद कॉमनवेल्थ में मेडल लेके आए. और जो रांची में हुआ वो ऑलरेडी मैं सुबह बोली हूँ, वो मेरे लिए या हमारी टीम के लिए कभी ना, जैसे अच्छी मोमेंट कभी नहीं भूली जाती, वो भी एक ऐसा पार्ट है कि जो हम कभी नहीं भूल सकते. क्योंकि काफ़ी मेहनत की थी, बहुत हर एक ने, इंडिविजुअल सब ने, और एज ए टीम हमने काफ़ी एफर्ट्स किया. अच्छी हॉकी भी खेले, बट शायद हार और जीत समटाइम्स हमारे हाथ में नहीं होता. हार्ड लक मैं नहीं बोलना चाहती, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा खेले, बट हार्ड लक रहा. वो हार्ड लक हमें 4 साल तक एवरी डे वो पेन फील होगा. बट स्पोर्ट्स यही सिखाता है कि आप गिव अप नहीं कर सकते और आपको मूव ऑन करना है. और इसीलिए हम उस चीज़ को भूल तो नहीं सकते, बट मूव ऑन करना पड़ेगा. और अपने आप को एज ए टीम हम देखते हैं कि क्या हमने अच्छा किया जो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, और क्या एरियाज़ है जिस पे हमें काम करना है. तो ये 4 साल हमारे डेफिनेटली उसी चीज़ पे फोकस रहेगा, और एज ए टीम हम स्ट्रांगली वापस आएंगे. बिल्कुल, हम सब ने चक दे इंडिया तो देखी है. दिस इज द रियल लाइफ चक दे स्टोरी गाइस. एंड ऑफ कोर्स फेलियर है, बट एक जनरल क्लीशे, एक डायलॉग है जो मैं मानता हूँ कि सही भी है, कि फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस, इट्स अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस. तो इस फेलियर को आपने जैसे बोला कि आप सीखेंगे और आगे चल के और बेटर रिजल्ट्स भी आएंगे, डेफिनेटली आएंगे. इसी बात पे मैं अमित से भी एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि अगर हम फुटबॉल देखें, हॉकी देखें, ज़्यादातर लाइमलाइट स्ट्राइकर्स ले जाते हैं, फॉरवर्ड्स ले जाते हैं. बीइंग अ डिफेंडर, जब आपको वो डर्टी वर्क करना पड़ता है कि मैं पीछे खड़ा हूँ, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हूँ, क्या चलता है थॉट में कि मेरा स्ट्राइकर पूरा लाइमलाइट ले गया, मेहनत मैंने की, ऐसा कुछ आता है थॉट्स, या क्या क्या रहता है आपके दिमाग में जब आप लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो, आप डर्टी वर्क कर रहे हो पूरे मैच में? देखिए, लास्ट डिफेंडर एक बहुत मतलब ऐसा पोजीशन रहता है कि अगर मेरे से बीट हो जाता है तो गोलकीपर को मिलता है. तो ऐसे हमेशा जो प्लान होता है, लास्ट डिफेंडर हो या मिडफील्डर हो या फॉरवर्ड हो, अपना अपना ड्यूटी करना पड़ता है कि मैं डिफेंडर खेलता हूँ तो मेरा ड्यूटी क्या है, मेरा पोजीशनिंग क्या है. तो फॉरवर्ड भी अपना पोजीशनिंग बना के फिर वो गोल करता है. तो हम लोग को भी इतना ही मेहनत करना पड़ता है कि पीछे उतना डिफेंस करना पड़ता है कि ओपोनेंट भी जितना भी अटैक करे, 1 वर्सेस 1 टैकलिंग करेंगे, तो वो हमारे लिए चैलेंजिंग होता है कि अगर हमारा फॉरवर्ड अच्छा काम कर रहा है, मिडफील्डर कम कर रहा है, तो डिफेंस ऑलवेज खड़ा रहता है कि हम भी जाने नहीं देंगे. जितना भी कोशिश करेंगे ओपोनेंट, तो पीछे हम उन लोग को चांस ही नहीं देंगे. ये मेरा
रहता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर जो प्लान होता है तो उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। Viren, my question to is, you have played along, some of the legends, and you have seen how the hockey has changed. What difference do you see when you were playing the hockey and now this new crop is playing with respect to the skills and the fitness level? First of all, for those who don't really watch too much hockey, I just want to obviously first, everyone knows Srijesh and Savita have been two pillars of India, both in the men's and women's team over the last decade. But I just want to also say a special word for Amit Rohidas. I think in today's world hockey, defending penalty corners is one of the toughest art. And there is no better man in world hockey than Amit Rohidas as the best first rusher to defend penalty corners. I think he's the bravest first rusher in world hockey, and Srijesh will provide testimony to the fact that as a goalkeeper, as a defense, you want the first rusher to be quick, brave, and really mad. And Amit Rohidas is all of those. So he has saved so many goals for India, so he deserves much more credit than he actually gets, Amit. And also thankfully the quality of equipment and padding has much improved today than what it was when I was playing. I think in terms of difference, I wouldn't say fitness levels are different. We were less fit at that time. I think it's intelligence in training and the science in preparation. I think today physiotherapy, strength and conditioning, nutrition, awareness of that is much better. Players eating the right thing, the right rest and recovery, right understanding about load management, that's improved a lot. But I think a big change in modern hockey, again from the time I played in 2004 at the Athens Olympics to say the Tokyo Olympics, I'll just give you a stat. In hockey these days, there is rolling substitution, right? So a player can go out and come back as many times as they want, get a break and get in. When I played at the Athens 2004 Olympics, there was a study done on how many average substitutions were done in a men's hockey match. And the number was about 10 rolling substitutions in an entire match. That is 70 minutes a match at that point of time. So in the Athens Olympics, I actually played unchanged for 7 matches. I was only changed once in the entire tournament in the very last final match. It is unthinkable in today's modern hockey. I think the Indian men's hockey team at the Tokyo Olympics, there was a stat done, not Indian men's hockey team, all men's hockey teams on an average, today in a 60-minute hockey match, there are 80 rolling substitutions in a 60-minute match. So an average of more than 1 substitution a minute. So you can imagine the pace and tempo that an entire hockey match is being played at. And if you're not up to speed, if you don't play at that pace in training, you will never be able to handle the pressure of that kind of pace and intensity. And that's why it's very important that hockey is changing so rapidly that it's not just, this cannot be done only in the Indian men's and women's national hockey team training camp. This has to be done in domestic hockey, it has to be done in junior hockey, it has to be done in grassroots hockey. And for that, our coaches have to keep pace with the latest modern training methods and techniques. If our coaches are not up to pace, we will play at a very slow pace. And when you suddenly go to the Indian national team and the pace and the intensity is so high, you have never seen it before in training, you make 5 mistakes in a match and you'll get 5 goals against you. So I think the big difference is rolling substitution and intelligent use of the rolling substitution, because it means from the first minute to the last minute. If you're playing against Australia, your heart rate will go to 200 in the first minute of the match. So you got to ensure that you're capable of playing at that tempo.